कहते हैं सही प्लानिंग और योजना आपको जीवन की अनिश्चितता से बचाती है, लेकिन जीवन की जिन अनसर्टेनिटीज की हम बात कर रहे हैं वो आखिर कौन सी हैं और इनके लिए तैयारी कैसे करें और जितनी भी प्लानिंग करें क्या वो काफ़ी है। सवाल थोड़ा फिलोसफिकल ज़रूर हो सकता है, लेकिन देखिए आर्थिक तौर पर तो हम आपको कह सकते हैं कि अगर आपने सही निवेश रणनीति अपनाई है ना, तो जीवन की तमाम फाइनेंशियल इमरजेंसीज की तो आपको चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। बस इसके लिए आपको रोज ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जरूर देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज मिलिए निखिल कामत से, जो हमें बाजार की नब्ज से लेकर निवेश और महंगाई और साथ ही कैसे इस माहौल में निवेश में डटे रहना चाहिए, इन तमाम चीजों के नुस्खे देंगे। एलआईसी की लिस्टिंग में आज दम नहीं दिखा। एलआईसी का शेयर 8.62% के डिस्काउंट के साथ 877 रुपए पर लिस्ट हुआ। क्या करें शेयर धारक, हम बताएंगे आज। क्यों 35 साल से कम उम्र के युवा कोविड के बाद नहीं जीना चाहते प्लान्ड और सेफ जिंदगी। युवाओं में पैसों को लेकर रुख में क्या है ये बदलाव, जानिए आज। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे शो में अपने सवाल आप भेज सकते हैं एक व्हाट्सएप के जरिए। जी हाँ, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। अपना सवाल चाहे तो वीडियो के रूप में शूट करके भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। महंगाई का वार किस पे कितना, ये हमारी पेशकश है जो इस पूरे हफ्ते हम जारी कर रहे हैं। और महंगाई और बाजार के तमाम पहलू और साथ ही इन सब का असर आपके निवेश पोर्टफोलियो पर कैसे पड़ रहा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत अरसे बाद, वो भी ट्रू बेकिन और जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत। निखिल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो सबसे पहले बाजार कहाँ जा रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, मेरे ख्याल से अप्रैल के आखिरी कुछ दिनों का आर्टिकल था, जहां पे आपको लग रहा था कि 17,000 पर भी बाजार थोड़ा सा महंगा है, तो मई तक में आप कह रहे थे कि लोगों को बेचकर निकल जाना चाहिए। अब आपका रुख क्या है? हाय कविता, तो बाजार कहाँ जाएगा ये प्रेडिक्ट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये शायद कोई नहीं कर पाए। बट अगर आप आज के दिन में देखें वर्ल्ड में कितने इश्यूज हैं, बीट विद इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, डोमेस्टिकली हमारे ट्रेड डिफिसिट और जिस जनरली स्लो डाउन के इश्यूज, तो वन हैज टू वंडर एंड पॉन्डर कि even 16,200 में are markets reasonably valued or is there further room for correction? From my perspective, मुझे ये लगता है आज कि ये इन्फ्लेशन का जो इशू है और जैसे हमारे आरबीआई या फेडरल रिजर्व अमेरिका में इन सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ेगा टू काउंटर इन्फ्लेशन। ये साइकिल जब तक खत्म होगा थोड़ी तो नेगेटिविटी रहेगी मार्केट में एंड इन्वेस्टर्स शुड बी कॉशियस ऑफ दैट। महंगाई का आपने जिक्र किया निखिल, महंगाई को आप कैसे देखते हैं? आप सलाह दें, लोगों को समझाएं महंगाई के तर्क और वितर्क। उससे पहले मुझे बताएं कि आप पर्सनली महंगाई को कैसे झेलते हैं, संभालते हैं, क्योंकि महंगाई हर किसी के लिए अलग होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि आपका पर्सनल इन्फ्लेशन इंडेक्स भी होता है। आपके लिए महंगाई ने कहाँ कहाँ मार डाली है, हमें बताएं। नहीं, आई थिंक महंगाई इज मोस्ट विजिबल। अगर मैं अपने बारे में एज अ कॉर्पोरेट बात करूं तो आई थिंक वेज प्राइस इन्फ्लेशन इज वेरी एविडेंट फॉर एवरीबडी टू सी। जैसे अगर आप 5 साल पहले आपको you had access to a certain quality of workforce, colleagues that you could hire. Today it costs a lot more. Everything from transport to
food price inflation to commodity inflation, it's very evident for us to see. जैसे अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों से steel prices, copper prices, most commodities which are a raw material that go into housing, they seem to have gone up by 60, 70, 100%. तो अभी भी अगर the entire pass on of the price hike has not happened, one can expect that within the next 6 months or a year, real estate companies, for example, will have to increase the price of the end product. The housing prices will go up like that. In every realm, everyone gets affected by inflation, right? Immaterial of who is doing what or what business one is operating in, we all feel the effect of inflation. मुझे बताइए कि अब इस महंगाई का आपके निवेश पोर्टफोलियो पर किस किस तरह से असर पड़ सकता है? So corporate margins कम होना is the very direct effect. अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखिए, अगर their raw commodity price has gone up by 50% and they're able to pass back or pass on 20-30% as a rate hike in the end product, that margin impact will definitely occur. जब margin impact होगा तो profitability comes down, and as a multiple of earnings, these companies will kind of like readjust to the new normal. ये सभी companies को pretty much affect होता है. Outside of that, I think just the currency in itself depreciating in the manner that it has. अगर आप रुपये की बात करें तो अगर आप सोचे कि आज हम 12% डाउन है from our peak of 18,400-500 Nifty at 16,200. In the same time, if the currency has depreciated by 4-5%, from a global standpoint, we have not corrected 12%, but we have corrected 16-17%. So, लोगों को उस चीज का भी mindful होना चाहिए. From a personal standpoint, as a portfolio, if I were to talk about how I invest, I've been allocating to gold aggressively. Gold अगर आप 40-50 साल पीछे जाके देखें तो आपको कितना गोल्ड चाहिए था एक एवरेज घर खरीदने के लिए in the 60s? You needed lesser amount of gold in the 80s. You needed lesser amount of gold in 2000, and you need lesser gold today. The gold historically has been a great hedge against inflation. And I have started allocating to it and have about 15-20% of my portfolio in gold today. I don't like the physical gold thing as an asset class. मुझे लगता है कि उसके साथ बहुत सरदर्द है in terms of security and safety and stuff like that. So I do it through gold bonds. SBI has a gold bond. Nippon has one. ये लोग operate करते हैं at about 60 between 50 to 70 bips management fee they operate, and I find myself investing more and more in that just because of how good a hedge against inflation I think it is. ऐसे में क्या आप इस रणनीति की सलाह उन निवेशकों को भी दे पाएंगे, क्योंकि देखिए महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और जितने भी एक्सपर्ट से हम बात भी कर रहे हैं, महंगाई लंबी चलने वाली है, इसमें कमी आएगी लेकिन वो धीरे धीरे आएगी, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि तमाम दुनिया की सरकारें कदम भी उठा रही है. RBI भी यहाँ पर सख्ती से कदम उठा रही है ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर. लेकिन अब अगर हम इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अपने पोर्टफोलियो पर देखें तो जैसे कि आपने कहा कि आपने सोने में अब ज़्यादा निवेश करना शुरू कर दिया है, तो गोल्ड अलाइनमेंट को थोड़ा सा हमें क्या रिवैम्प करना होगा? क्या हमें अपनी निवेश रणनीति में इस वक्त इस महंगाई को देखते हुए कुछ बदलाव लाने चाहिए? हाँ, बिल्कुल. मेरे ख्याल से ये क्या लास्ट 2 years मार्केट ने रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा investors have gotten jaded by the experience of the last 2 years. स्टॉक मार्केट्स ऐसी जगह नहीं है जहां आप कंसिस्टेंटली 30-40-50% in our case 70-80% in a year आप कमा सकें. Expectations have to be rebalanced to reality. अगर आप साल का 12% कमा सके and with the favorable long-term capital gain tax regime in India, if you're able to compound your money
हर 6 साल आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, इवन एट दैट रेट ऑफ रिटर्न. सो आई थिंक पीपल हैव टू काइंड ऑफ लाइक रीबैलेंस एक्सपेक्टेशंस, और उन्हें मार्केट में निवेश करना चाहिए विद एक्सपेक्टेशंस लाइक दैट. अगर कोई आज आप often you read stories about so many new investors coming onto the market. अगर कोई मार्केट में 30, 40, 50, 100% रिटर्न्स कमा सकते हैं उस रीजन से आए, तो they will have to take the level of risk which is probably not sustainable. So I think my big suggestion from here is आप प्लान ऐसे कीजिए कि आप 12% कैसे कमाएंगे, and then if you get lucky that's a bonus, but I think you have to plan like that. का फिलहाल जो हम लेवल देख रहे हैं, जिस तरह की कमजोरी बाजार में दिख रहे हैं, आपको लगता है कि अब ये एक फ्री फॉल के सिनेरियो में बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बचने के लिए बेहतर है अगर आप लार्ज कैप्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में ही बने रहें? हमेशा आई थिंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट क्वालिटी इतनी बड़ी चीज है कि 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स मैं जब भी किसी को बाजार के बारे में बोलता हूँ, I always say stick to blue chip largest of companies. अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 stocks में भी रहें तो I think it's a really good thing, because then you don't have to worry about compliance and governance and like somebody managing the stock and all of that, and it's a simpler and a better way to invest. So I would always advise that. बाइंग अगर हमें मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में करनी हो, सबसे पहले तो क्या आपको लगता है कि ये करना सही है, और अगर आपको करना हो तो किस तरह के सेक्टर्स पर आपका फोकस होगा? ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि कोई ये तो नहीं कह सकता एक्यूरेटली कि कब किसे क्या खरीदना चाहिए. बट फ्रॉम एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट, जब तक अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, एंड इफ आई वर टू मेक एन assumption कि 50-60% of your portfolio is in equity and the balance being in debt and gold and real estate and other asset classes, मेरे ख्याल से अभी भी ऐसा टाइम लगता है कि इट्स अ गुड आइडिया टू reduce equity allocation and increase allocation to safer asset classes. अभी ये डेट का भी ये प्रॉब्लम है कि depending on the kind of debt you buy, if you buy tax-free bonds or government debt or GSEC, in increasing interest rate cycle, you will start to run up mark-to-market losses, क्योंकि आपने पेपर तभी खरीदा था जब उसका rate of return was lower than it is today, so you'll have to pay that mark-to-market losses. So be careful of the kind of debt you buy. But equity में आपका कितना allocation है? अगर आज के दिन में आपका 50-60% है तो उसे थोड़ा कम करना is not a bad idea. बिल्कुल. जैसे कि हम भारत में तमाम ट्रिगर्स देख रहे हैं, जो कठिनाइयां देख रहे हैं, चिंताएं देख रहे हैं, अगर मैं ग्लोबली बाकी दुनिया के देशों के साथ इसकी तुलना करने को कहूँ आपको, तो भारत किस स्थिति में है, कैसे देखते हैं आप? अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो दे लुक एट अस वेरी फेवरेबली. वो हमें कंपेयर कर रहे हैं विद चाइना, विद emerging market, South America, the Northern America. Relative to those geographies, मेरे ख्याल से India is looking very attractive. And I think full credit to the government and the stability that we have had on the top under Modi ji, that India's look today as a very stable region to invest in, unlike how an international fund or investor might have perceived it 10 साल पहले या 15 साल पहले. So on a relative basis, we are still very, very attractive. I would say one of the most attractive geographies in the world. But that being said, जहाँ से पैसा originate हो रहा था and it was coming into emerging economies, जो पैसा इंडिया को आके FIIs, FPIs used to invest, the source of that money is drying up. Agar the Federal Reserve in America were to start to tighten even more aggressively in the future, they might not have allocation for any country. In a relative environment, हम ये बोल सकते हैं कि India is better than other countries, but that source of capital is still, the question कि वो कहाँ से आएगा.
थोड़ा सा इन्वेस्टर बिहेवियर और माइंडसेट पर हम बात करते हैं। जिस तरह की कमज़ोरी बाज़ार में हम देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न्स को लेके आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपने आस लगा के रखी थी, वहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग की जाए, रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेटिंग। इसको हम कैसे समझाएं हमारे दर्शकों को, निवेशकों को, जिन्होंने शायद 2020 में ही शुरुआत किया हो निवेश करने को लेकर और उसके बाद उन्होंने बम्पर रिटर्न्स देखे, मुनाफे देखे, और अब इस तरह का बाजार जहां पे इक्विटी में उनको कुछ खास मुनाफा नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो कैसे समझाएं अपने आप को? Well, I think the most important thing जो बहुत सारे लोग often ignore करते हैं is the power of compounding. A very simple way to explain it is the rule of 72. अगर आपको देखना है कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा, so you divide the rate of return you're going to earn by 72. So if you're going to make 12% a year, 6 times 72, you double your money in 6 years. If you make a 20% return, you double your money in 3.5, 4 years. So with the benefit of compounding, you don't really have to wait. You don't really have to try and kind of achieve such a high rate of return. अगर आप 12, 13, 15% नेट ऑफ चार्जेस एंड टैक्सेस कमा सकते हैं, तो इट्स एन इनक्रेडिबल रिटर्न. एंड मैं पहले 5 सालों की बात कर रहा हूँ, बट व्हेन यू अलाउ कंपाउंडिंग टू रन फॉर 15-20 years, जैसे हम सोच रहे हैं कि जिन्होंने अभी निवेश किया है पिछले साल या पिछले 2 सालों में, they're probably young people in their 20s and 30s, and they have a 30-year runway. So plan equity market allocation, not like, you're going to live for the next 3 years or 4 years or 5 years. Don't be so short-sighted with it. But अगर आप ये सोच के इन्वेस्ट करें कि मुझे 30 years में मेरे सेविंग से क्या चाहिए, I think the entire equation changes very quickly. LIC की IPO की लिस्टिंग को लेकर आप क्या कहेंगे वो तमाम शेयरधारकों को जिनको थोड़ी सी मायूसी, हालांकि काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्टेड भी था, जिस तरह से हम जानकारों की सलाह भी दर्शकों को पहुंचा रहे थे, अब रणनीति क्या होनी चाहिए इन शेयरधारकों की? So it's unfortunate. Timing शायद अच्छा नहीं था, but you can't blame anybody for that because nobody knew कि ये यूक्रेन रशिया होगा, ये इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ने लगेंगे एंड मार्केट्स विल करेक्ट. सो again, you can't blame them for the timing, but timing was probably bad. मेरे ख्याल से unlike many other companies जिन्होंने recently IPO किए हैं, LIC is a different beast. LIC has earnings, it has assets, it has fundamentals, and it is not overvalued in a true fundamental sense. I personally don't think it. I don't look at it and think it is overvalued when I review the stock. LIC को थोड़े structural problems हैं. I think their problems are also their advantages in many ways. They might have access to tier 2, tier 3 towns like no other insurance provider, but they're very heavily reliant on their distribution network, which also is expensive because a large part of the premium or the fees goes to these distributors. जब जैसे हम लोग सब assume कर रहे हैं tomorrow we will live in a more online world, what with the metaverse and in so many different ways, the world is going to be more connected tomorrow than it is today. The question tabhi does arise ki how will LIC with this manpower-led distribution network and issues of its own compete in a world like that? But all that being said, mere khayal se LIC is a reasonably valued stock, and that 7-8% correction which we saw on day one, it probably is more a factor of the underlying market versus mispricing by whoever was leading the IPO, because I don't think they did too bad a job with it. I think they priced it reasonably. जो दर्शक आपको सुन रहे हैं और अगर उनके पास निवेश करने लायक पैसा है, क्या अभी पैसे लगाने चाहिए बाजार में, या आपको लगता है किश्तों में लगाने चाहिए, या आप कहेंगे कि थोड़ा सा रुक जाइए? और मैं कहना चाहूँगा हमेशा किश्तों में लगाना इज अ गुड आइडिया.
बट आई थिंक द वन बिग एडवाइस मेरे से होगा कि डू नॉट लुक एट योर पोर्टफोलियो एंड थिंक कि मुझे सिर्फ ये स्टॉक खरीदना है और आई वांट टू आई हैव लाइक 5 lakh rupee savings, so I will buy stock X with 5 lakh rupee savings. I think diversification is key. हर मार्केट का खुद का साइकिल होता है. For a long time in our history, gold and stock markets were inversely proportional. Interest rate cycles going up are probably bad for BFSI space. Rupee depreciating is probably good for IT companies and the services sector. So there are many different cycles. So the key is अगर आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को है in your savings, definitely put maybe 1 lakh or 1.5 lakhs in an asset class where there is no risk. You can buy some really well-rated corporate debt, which is AAA plus, and get 8, 9, 10%, whatever the rate available today is. Definitely have that allocation which is risk-free in your portfolio. Thoda gold le lijiye, and then maybe you put 40-50% to equity, and you don't put all of that money in any one asset class or any one company ever. सही सलाह दी आपने. डाइवर्सिफिकेशन मेरे ख्याल से एक ऐसा रामबाण है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आपके तमाम रिस्क को तो कम करता ही और ख़ासतौर से महंगाई जैसे संकट को निपटाने में आपकी सहायता भी करता है. निखिल कामत, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने समय निकाला और इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल हुए, सलाह दी दर्शकों को. धन्यवाद. चलिए हम